Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. If I am audible, please write yes in the comment box. अगर आपको साउंड प्रॉपरली आ रहा है तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई कैन स्टार्ट. If I am audible, please write yes in the comment box so that I can start. If I am audible, okay. Devesh, thank you. So today we are going to start a new chapter from anatomy physiology, and that is nothing but the circulatory system or cardiovascular system. Right? Yes. So before starting drug acting on cardiovascular system, you should know the cardiovascular system, and you should know what is meant by heart, what is meant by blood vessels. Okay, basically you should know the anatomy physiology of circulatory system. If you know anatomy physiology of circulatory system, then you can understand the drug acting on cardiovascular system. If you are not aware that how there is a contraction of your heart, how there is a myocardial contractility is affected, how there is a regulation of blood pressure, if you don't know these things, you will not understand the antiarrhythmic drugs and antihypertensive drugs, right? That's why first of all you have to understand this circulatory system. Okay, first of all you have to understand the circulatory system, and then only you will understand the drug acting on cardiovascular system, right? So again, circulatory system is one of the communication system in our body. So it is a communication system. So body will communicate with each other via this circulatory system. तो ये याद रखना है कि बॉडी में से कम्युनिकेशन किसके बीच में, देयर आर 3 कम्युनिकेशन सिस्टम. एक होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, और एक होता है हार्मोनल सिस्टम. तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है बॉडी के, डिफरेंट ऑर्गन्स दे आर इन अ कम्युनिकेशन विथ ईच अदर. तो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं. ब्रेन, किडनी, हार्ट, लीवर, स्किन, जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं. जैसे एक तो होता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, तीसरा होता है हार्मोनल सिस्टम, और चौथा होता है नर्वस सिस्टम. तो out of this, one of the communication system is a circulatory system, right? So in the circulatory system, what you have heart. In the circulatory system you have heart. So heart is nothing but it is a pumping system of your body. So heart will pump a blood. So what is blood? We have already seen. So heart is a major organ that pumps the blood throughout the body. So from the heart, blood is carried to every tissue, every cell of your body. हार्ट से पूरे सिस्टम में, पूरा बॉडी में आपका ब्लड जाता है, ठीक है. सो हार्ट इज अ पंपिंग सिस्टम. So it acts as a double pump. So it will pump the blood to the body, to various tissues and cells, and again it will also receive blood from the tissues and organs. Okay, so it will pump the blood and it will also suck the blood. So that's why it is a double pump. Remember, heart is your double pump. Heart acts as a double pump, right? So so heart will pump the blood from blood to the different organs of our body, and also collect the blood from different organs of your body, right? So blood is nothing but it is a fluid connective tissue that lies in the blood vessels, right? And we have seen about the blood. ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में सब न्यूट्रिशन होते हैं, सब है ना, इंक्लूडिंग योर
प्लाज्मा प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, जो भी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, lipids, amino acids, vitamins, minerals and gases are there in our blood, right? Now, so what is the main role of cardiovascular system? The main function or main role of cardiovascular system in the body is to pump the blood and to supply oxygen and nutrition, to supply oxygen and nutrition to the all tissues and to withdraw the waste material, है ना. पहला काम होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई करना, है ना. ब्लड विल सप्लाई द ऑक्सीजन टू द ऑल टिश्यू, ब्लड विल सप्लाई ऑक्सीजन टू द ऑल टिश्यू, है ना. ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? O2. तो ब्लड विल सप्लाई ऑक्सीजन टू द ऑल टिश्यू and withdraw the carbon dioxide. The carbon dioxide will be it is nothing but the waste material. Carbon dioxide will be withdrawn. So blood will supply oxygen to the all tissue and will withdraw the carbon dioxide from the tissue, right? Withdraw the carbon dioxide from tissue, right? So that is the function of your cardiovascular system. Now cardiovascular system है ना, circulate the blood. So major circulation क्या होता है? So your heart will pump the blood, है ना. your heart, suppose this is your heart, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, तो this is known as the left side of your heart, ये आपका हार्ट का लेफ्ट साइड है, and this is known as your right side of your heart, right side of your heart. So now heart will pump the blood, mostly to the majorly to the your body's system. This heart will pump blood that will received by your different cells and tissue, so known as a systemic circulation. Now, heart will pump the blood to the tissues and organs of your body, known as a systemic circulation. तो जो blood supply होता है from the heart to the your kidney, to the your heart, to the your liver, to the your skin, to the your brain, so that is known as a systemic circulation, okay? Or also known as a major circulation. सिस्टमिक सर्कुलेशन को ही अपन बोलते हैं मेजर सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन और मेजर सर्कुलेशन. ओके, सो द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस टिश्यूज is known as a systemic circulation or major circulation. Systemic circulation or major circulation, there is a flow of blood from heart to the different body tissues, right? Now this flow is via blood vessels. I will come to the blood vessel later on. So this is known as a major circulation. So blood from your heart, याद रखना है, blood from your heart that is supplied to your different bodies tissues, including kidney, liver, your brain and all cells, right? Okay, and there is a withdrawal of blood from these tissue towards the heart. So withdrawal of blood. So okay, so supply of blood, that is the oxygenated blood. जो सप्लाई होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और प्योर ब्लड होता है. तो सप्लाई ऑफ ब्लड टू द टिश्यू विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वेरियस टिश्यूज ऑफ योर बॉडी नोन एज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन. एंड एट द सेम टाइम विड्रॉल ऑफ दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड, और इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो इम्प्योर ब्लड है ना. So supply of blood to the various tissue of body for metabolism purpose, for metabolism. आपका सेल टिश्यू जो है वो मेटाबॉलिज्म करता है, and for the survival of your cell tissue, for the carrying out its own function. Okay, so tissue needs a nutrient. Tissue needs a nutrient. So nutrient along with the oxygen is supplied to a various tissue by heart. Heart will pump the blood to a various tissue, right? Now what will happen in the tissue? It will take oxygen, you know, for metabolic reaction, and metabolic reaction will be carried out and it will deposit carbon dioxide in the blood. Now oxygen containing blood is known as a oxygenated blood. जिसमें ऑक्सीजन है ब्लड में, तो oxygenated blood, and the blood in which there is a carbon dioxide, no oxygen, known as a deoxygenated blood. Okay? यहाँ पे deoxygenated blood that will be supplied back to the heart, right? So simply a circulation of blood to a various tissues and organs of body, cells of body for the metabolism, okay, and
to supply the oxygen is known as a major circulation or systemic circulation. इसको अपन बोलते हैं major circulation or systemic circulation, right? Now again at the same time your heart will also pump a blood. Heart will also pump a blood to your lungs. So heart will pump blood to your lungs, right? So now heart will pump deoxygenated blood to the lungs, है ना, मतलब blood containing mostly carbon dioxide as a waste, so that will pump to the lungs. So right side of your heart has a deoxygenated blood. So right side of your heart has a deoxygenated blood, left side of your heart has a oxygenated blood. लेफ्ट साइड का जो हार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, है ना. लेफ्ट साइड का जो पार्ट है हार्ट का, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड throughout the body, which is a oxygenated blood, which is rich in the oxygen, right? And it will be pumped to various body organs, tissues and cells, known as a major circulation or systemic circulation. But your heart is a double pump, it will also suck the blood. So which blood will be returned to the heart? That returning blood is a deoxygenated blood. So ये जो ब्लड है deoxygenated blood रहेगा, क्योंकि सप्लाई तो कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का. वहाँ पे सेल्स टिश्यू में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. एंड देयर इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच इज रिटर्निंग टू द हार्ट. नाउ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजनेशन होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है. तो अभी कौन करेगा ऐड? वो करेगा लंग्स, राइट? So your heart will also pump this deoxygenated blood to the lungs. In the lungs again there is a exchange of gases. So carbon dioxide will be taken off and will be removed and oxygen will be deposited by diffusion. आपके lungs में क्या है? air sacs होते हैं, alveoli होते हैं. In your lungs there is alveoli, air sac. So the deoxygenated blood means carbon dioxide containing blood is exchanged. Carbon dioxide is diffused out of the blood and oxygen is deposited in the blood. So in the lungs there is a oxygenation of blood. So in the lungs, so that blood is returned again to the heart, in the left side of your heart. So now it is a oxygenated blood. So heart will act as a double pump. Heart will pump the blood to various tissues, various organs of your body, known as a systemic circulation for the metabolism. And also heart will pump the blood to a lungs for the exchange of gases, known as a minor circulation. Now pumping of blood to the lungs, known as a minor circulation or pulmonary circulation. Okay, so heart will pump the blood to the lungs for oxygenation, known as a pulmonary circulation or minor circulation. इसको अपन minor circulation बोलते हैं. And heart will pump the blood to the body organs and various organs, tissues and cells for the metabolism, known as a systemic circulation or major circulation. तो इसको major बोलते हैं, है ना. mj लिखता हूँ यहाँ पे, mj major circulation, and it is known as a minor circulation, right? So minor circulation, right? Now this circulation of blood is through the blood vessels. ये blood का circulation जो होता है वो blood vessel के through होता है, right? Blood vessels. So blood vessels are of two type. Blood vessels. Circulation of blood is through the blood vessels, and blood vessels are of two types. Say for example, there are arteries and vein. There are two type of blood vessel. Arteries एक होता है vein. So heart will pump the blood via arteries. So arteries will carry blood to a different organ. So arteries are large blood vessel. Then arteries will divide and redivide into arterioles. Arterioles are the small blood vessels, and arterioles will divide and redivide to form a capillaries. तो पहले हार्ट सप्लाई करता है ब्लड आर्टरीज के थ्रू. आर्टरीज छोटे छोटे हो जाके, मतलब आर्टरीज डिवाइड होते हैं और उनका साइज कम होके बनता है आर्टरीओल्स, है ना. आर्टरीओल्स का भी साइज कम होके बहुत सारा डिवाइड होके बनता है कैपिलरीज. नाउ कैपिलरीज क्या करते हैं? कैपिलरीज आर द यूनाइट विद द
वेन कैपिलरीज. तो वेन क्या होता है? तो आर्टरीज विल सप्लाई ब्लड टू द organs. So artery will carry blood away from the heart. Artery will carry blood away from the heart, right? And veins are also a kind of blood vessels. So veins will carry blood towards the heart. तो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाने वाला का काम किसका है? वेन्स का है. एंड हार्ट के बाहर लेके जाने का काम किसका है? आर्टरीज का है. तो आर्टरीज विल कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स. ओके, आर्टरी विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑर्गन्स, है ना, है ना. तो आर्टरी विल डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू आर्ट्रियोल्स. आर्ट्रियोल्स विल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म ए कैपिलरीज. कैपिलरी इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरी प्लस वेन्स का यूनाइट होता है. सो देयर इज अ यूनियन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स इन द कैपिलरीज, राइट. तो कैपिलरी, so capillary will vein capillary will unite to form a venules, and venules will again unite to form a veins. So veins are larger than venules, venules are larger than vein capillaries, है ना. vein capillaries उसको sinus भी बोलते हैं, right. Now veins will carry blood towards the heart, which is the deoxygenated blood, and arteries will carry oxygenated blood to the different bodies, tissues and cells. Bodies, organ, tissues and cells, right. Remember, now remember, arteries are known as a resistant blood vessel. Arteries are also known as a resistant blood vessel, and veins are known as a capacitance blood vessel. Arteries are known as a resistant blood vessel and veins are known as a capacitance blood vessel. तो दो टर्म हो यहाँ पे, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंट. ये टर्म आपको बाद में भी आएगा. आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन ऑल्सो. तो रिमेंबर, आर्टरीज आर नोन एज अ रेजिस्टेंट ब्लड वेसल एंड वेन्स आर नोन एज अ कैपेसिटेंस ब्लड वेसल. तो बिकॉज आर्टरी क्या है? आर्टरी विल रेजिस्ट द ब्लड फ्लो. आर्टरी विल रेजिस्ट द ब्लड फ्लो and that's why they are known as a resistant blood vessel. And veins, veins will collect the blood. Okay, and veins will collect the blood, and collection के कारण उनमें blood होता है veins में, है ना. तो veins में blood बहुत ज़्यादा होता है. So that's why they are a capacity. They have a capacity to store the blood. That's why they are known as a capacitance blood vessel. तो ये बहुत बच्चों को मालूम नहीं है कि आर्टरीज आर नोन एज अ रेजिस्टेंट ब्लड वेसल एंड वेन्स आर नोन एज अ कैपेसिटेंस ब्लड वेसल. क्यों बोलते हैं? बिकॉज आर्टरी क्या करता है? ब्लड विल कैरी बाय आर्टरीज टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स, है ना. तो आर्टरीज, मेजर जो आर्टरी होता है वो आर्टरी, उसको आर्टरी बोलते हैं. मेजर ब्लड वेसल इज नोन एज आर्टरी. उसके बाद में मेजर ब्लड वेसल कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड नोन एज आर्टरी. उसके बाद में वो डिवाइड होके स्मॉल आर्टरीज बनता है, उनको बोलते हैं आर्टरीओल्स. नाउ आर्टरीओल्स में क्या होता है कि मस्कुलर लेयर ज़्यादा होता है, एंड आर्टरीओल्स विल रेजिस्ट द ब्लड फ्लो, है ना, विल क्रिएट अ प्रेशर. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ रेजिस्टेंट ब्लड वेसल. एंड वेन्स क्या है कि वेन्स विल कैरी ब्लड टू द हार्ट, है ना, एंड दे विल स्टोर द ब्लड. दैट्स व्हाई नोन एज अ कैपेसिटेंस. दे हैव कैपेसिटी टू स्टोर द ब्लड, capacitance bloods. So circulatory system or cardiovascular system consists of heart, blood vessels, है ना. So it is a communication system that communicate with the various organs, various tissues, various cells. Along with the circulatory system, आपको along with the circulatory system you have lymphatic system also run parallelly, है ना. Lymphatic system will also run parallelly. Nervous system will also run parallelly, right. So it is the overall idea of your cardiovascular system. Now you can see you have a major organ for cardiovascular system is a heart. So main organ क्या होता है? Heart. So heart is a major organ for cardiovascular system. What is heart? It is known as a pump. It is known as a pump, double acting pump. So it is a hollow muscular organ that lies in the thoracic cavity, है ना. आपका हार्ट कहाँ पे होता है? थोरेसिक कैविटी में. सो दैट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी, राइट. सो इट विल, हार्ट का वेट अराउंड कितना होता है? सो इन द वुमेन्स हार्ट विल वे अराउंड 240 ग्राम्स. इन द मेल्स, है ना, जैसे यहाँ पे देखो वुमेन्स में कितना होता है वेट हार्ट का? अराउंड 240 ग्राम्स, है ना, नियर अबाउट
240 grams. यहाँ पे लिखना ही सकता, प्रॉपरली लिखना ही वो लिखना है यहाँ. So weight of heart in the woman 240 grams on an average, and in the males around 310 grams. तो वुमेन्स में वेट होता है उसका अराउंड 250 ग्राम एंड मेल्स में होता है उसका अराउंड 300 ग्राम. Weight of heart is a hollow muscular organ that pumps the blood throughout the body and also receive the blood throughout the body. Now structure of heart अपन देखेंगे उसमें. तो राइट, तो हार्ट हैज अ 2 मेजर ब्लड वेसल. हार्ट के ऊपर क्या है, 2 मेजर ब्लड वेसल होता है. तो वन इज नोन एज अ वेन्स एंड वन इज नोन एज आर्टरी. तो है ना, तो हार्ट हैज अ 2 मेजर ब्लड वेसल, आर्टरी एंड वेन. तो हार्ट will receive the blood, heart will receive the blood from veins. वेन के जरिए ब्लड वेन्स जो होता है, मेजर 2 वेन्स है ना, हार्ट विल रिसीव अ ब्लड वाया मेजर 2 वेन्स फ्रॉम एंटीरियर पार्ट, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो होता है, फ्रॉम एंटीरियर पार्ट और राइट फ्रॉम सुपीरियर पार्ट ऑफ योर बॉडी. योर हार्ट विल रिसीव ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कव. सुपीरियर वेना कव मतलब जो आपका थोरेसिक केज है या ब्रेन है, वहाँ से ब्लड रिसीव होगा हार्ट में वाया सुपीरियर वेना कव, राइट. एंड फ्रॉम इंफीरियर पार्ट ऑफ योर बॉडी, मतलब जो आपके थोरेसिक केज के नीचे जो पार्ट है ना, से फॉर एग्जांपल लिम्स, एब्डोमेन, किडनी एक्सेट्रा. सो हार्ट विल रिसीव अ ब्लड, deoxygenated blood via this inferior vena cava. So they are the 2 major veins which supply blood to heart. That blood will be carried to this right है ना, राइट एट्रियम ऑफ योर बॉडी है ना. यहाँ पे 4 चेम्बर होता है, राइट एट्रियम है ना, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट ventricle and left ventricle. There are 4 chambers in heart. We will come to that later on. Now arteries. So major artery is nothing but the aorta. Largest artery कौन सा होता है, aorta. तो aorta largest artery होता है that will carry oxygenated blood from heart to the different organs. Heart to the different organs है ना. So different blood vessel associated with the heart. इसका डायग्राम का पर्पस क्या है, different blood vessel associated with the heart. तो 2 मेजर कौन सा है, आर्टरी एंड वेन. तो वेन्स कौन से है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा. So they will carry blood towards the heart. Superior vena cava will carry blood from upper part of your body, that is known as the superior part, and inferior part से blood will collected by, from inferior part blood will be collected by inferior vena cava and it will be sent to your brain, known as the right atrium. Right atrium. Now from the again from the aorta is a major artery, largest artery which will supply blood to the different organs, this aorta, right. Now to the lungs, blood will be supplied by this right pulmonary artery. So right pulmonary artery, so it will supply blood to lungs. Right pulmonary artery will supply blood to the lungs, and right pulmonary vein will drain the blood from will drain the blood from lungs. तो right pulmonary artery जो होता है that will supply blood to the lungs, but right pulmonary artery में कौन सा blood होता है, that is a deoxygenated blood. So it is the only artery which has a deoxygenated blood. यहाँ पे एक चीज याद रखना है, the only artery present in the blood, present in the body. आपके बॉडी में नॉर्मली आर्टरी में क्या होता है, आर्टरीज में नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट the only artery present in the body which has a deoxygenated blood that will be supplied to your lungs. Okay, and right pulmonary vein will drain the artery, will drain the blood from lungs. ठीक है. Now left pulmonary artery. Okay, left pulmonary artery and left pulmonary vein. So deoxygenated blood will be supplied to the lungs via right pulmonary artery.
and oxygenated blood will be supplied to a lungs for its work is right pulmonary vein. तो ये opposite होता है, most of the arteries will supply oxygenated blood, but in the lungs वो opposite होता है. In the lungs, right pulmonary artery has a deoxygenated blood, right pulmonary vein has oxygenated, but right pulmonary artery will supply blood to a lungs will exchange the gases. lungs में क्या होगा, ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड है ना एक्सक्रीट होगा, तो वहां से ब्लड है ना, वहां से ब्लड आएगा आपका लेफ्ट पल्मोनरी वेन. सो लेफ्ट पल्मोनरी वेन will carry oxygenated blood from lungs and it will deposit blood into heart in the left side of your heart, right? Now left side heart का आपका जो oxygenated blood है वो बाकी एरिया में जाएगा, right? So this is known as a left pulmonary artery and this is a right pulmonary artery, right? And the blood to the heart is supplied by the coronary blood vessels. Coronary blood vessels. तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि aorta will supply oxygenated blood to the body, है ना, यहाँ से सब बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लोअर बॉडी से आएगा इंफीरियर वेना कावा में, अपर बॉडी से आएगा आपका सुपीरियर वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो आएगा आपका राइट साइड ऑफ योर हार्ट. राइट साइड का जो हार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. राइट साइड से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट साइड से ब्लड जाएगा लंग्स में, है ना, फॉर ऑक्सीजनेटेड वाया राइट पल्मोनरी आर्टरी, है ना, एंड वहाँ से ऑक्सीजनेशन होके कहाँ पे आएगा, दैट राइट पल्मोनरी वेन विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइट, है ना, सॉरी लेफ्ट पल, है ना, सो दैट कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. सो लेफ्ट pulmonary vein will carry blood to the heart, oxygenated blood, right? So ये होता है. Other parts of your heart, you know, different parts of your heart. So you have this one is known as the right atrium, means right heart के side में जो chamber है known as the right atrium, right atrium, and this one is known as the right ventricle. So your heart has a 4 chamber, right atrium, right ventricle, then left atrium यहाँ पे होता है, left ventricle यहाँ पे होता है, right? Now to the heart muscle, heart is a muscular organ, so that also need a nutrient. heart के लिए भी nutrient लगता है, ऑक्सीजन लगता है. to the heart blood is supplied via coronary artery. This is a right coronary artery, this is known as a left coronary artery. So right coronary artery, left coronary artery, left coronary vein, right coronary vein, है ना. So coronary artery will supply blood to the heart itself. हार्ट के लिए भी ब्लड लगता है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाला कौन है, कोरोनरी आर्टरी. और इसमें अगर कुछ ब्लॉकेज होता है तो आपको क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिसीज और हार्ट अटैक, है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. तो है ना, सो कोरोनरी आर्टरी विल बी अराइजिंग फ्रॉम योर aorta that will supply blood to the heart, oxygenated blood, and from deoxygenated blood from heart muscle will be carried by coronary vein, right? So there are two coronary artery, right coronary artery and left coronary artery. Both are arising from the aorta. Aorta से ये blood heart को supply करता है. And aorta क्या है, aorta is a major artery which supply the blood to the various body. जैसे ये aorta will supply to various body, यहाँ से भी आएगा left clavicle artery, ये भी, right? Now you can see the different organs. So again the structure of heart, different part, ठीक है. aorta will carry oxygenated blood, है ना, aorta. Now first blood flow कैसे है, right? So deoxygenated blood, used blood from your lower body part that is carried to a inferior vena cava, from upper body part that is carried to a superior vena cava, है ना. deoxygenated blood from upper body part will be collected in a superior vena cava and from lower part will be collected from inferior vena cava. तो जो बॉडी का यूज्ड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड, वो कलेक्ट होगा वेना कावा में, सुपीरियर मतलब वो अपर वाली बॉडी पार्ट से, लोअर बॉडी पार्ट से मतलब इंफीरियर बॉडी पार्ट से. दैट विल बी कलेक्टेड and that will be sent to your
राइट एट्रियम, यहाँ पे कलेक्ट होके ब्लड आएगा, तो है ना, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट, है ना, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे देखो ब्लड, and that blood flow. Okay? Now in between right atrium and right ventricle you have tricuspid valve, or atrioventricular valve, tricuspid valve. Now that will prevent the entry of blood into the this right, है ना, right ventricle, right atrium से आएगा right ventricle में, तो right ventricle से blood का back flow नहीं होना चाहिए, so that will prevent a back flow of blood from right ventricle to the right atrium and right, है ना, so that's why tricuspid valve. Now from right ventricle blood will be pumped to the this lungs, so via pulmonary vein. So right pulmonary vein will supply a blood to the right part of lung. There are two lungs ना, दो lungs होते हैं आपके, and left will supply to the left lung, right? So from lungs purification of blood will be there, blood will come to the your heart, है ना, हार्ट में कहाँ पे आएगा ब्लड, यहाँ पे आएगा, तो राइट, है ना, pulmonary vein will drain a blood, oxygenated blood into a right, है ना, known as a left atrium, ये लेफ्ट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, that will in between the left atrium and left ventricle. Atrium को अपन auricle भी बोलते हैं, so atrium is also known as auricle, so left auricle, right auricle, ना, left ventricle, right ventricle, like that. So left atrium में blood आएगा, oxygenated blood from the lungs, that is carried to a left ventricle, and from left ventricle blood will be pumped into the aorta will supply blood to various body, so it's a blood flow, right? Now cardiovascular system includes different organs, ये तो है introduction. Cardiovascular system includes heart, है ना, that will pump the blood into blood vessel. Then blood vessel का काम क्या है, blood vessel will circulate the blood into the body, है ना, blood supply nutrition oxygen to the tissue that takes place, है ना, so that, है ना, heart will pump the blood using blood vessel will carry the blood to the various organs of your body for क्यों, to supply nutrient, to supply oxygen to the tissues and cells, and again the same time the tissue waste material क्या होता है, carbon dioxide, so carbon dioxide will be taken back, waste material, okay, right, yes or no, right? Now what is the heart? Heart is nothing but the, you know, heart is nothing but the very important organ of your cardiovascular system, is a very important organ because it pumps the blood, to various parts of your body. So the blood vessel, okay. So what is heart? Heart is a hollow muscular organ that pumps the blood, and throughout the body, also receive the blood from the body. Now heart is made from a, and heart, जैसे मैंने बोला है, what is the weight of a heart का position क्या है, that is important for your 12th में पढ़ा होगा आपने, so it lies and it will lie in the thoracic cavity, है ना, it is slightly inclined to the left side, है ना, it is slightly inclined to the left side, about 9 centimeter away from the midline. वो आपका 12th में हो चुका है, it is not required now, okay. It is a hollow muscular organ located in the thoracic cavity between the two lungs, in the mediastinum. Now heart is made from 4 chambers. Heart is made of 4 chambers. हे गरज आहे का, नंतर करता येणार नाही का?
Heart is made of 4 chambers. There are 4 chambers. So 2 chambers are known as atrium or atria, or auricles. इनको सेम नाम है. So atria or auricles or atria or atrium or auricles. There are 2 atrium and there are 2 ventricles. There are 4 chambers in the heart. Now there are 2 sides of your heart. Right side भी होता है, left side भी होता है. Right, left side भी होता है. So right side has a 2 chambers. पहला होता है right atrium, जैसे मैंने दिखाया आपको. It is a thin wall. इसका जो wall होता है thin है. It has a low pressure. In the right side, it has a low pressure and has a SA node. इसमें SA node होता है, sinoatrial node, है ना. Right ventricle क्या है? It is a thick walled and high pressure. तो यहाँ पे एक चीज समझ में आएगा कि एट्रियम में प्रेशर लो होता है, वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होता है ना. तो राइट एट्रियम हैज अ लो प्रेशर, राइट ventricle has a high pressure. In between right atrium and right ventricle there is a tricuspid wall, है ना. Right atrium receives the deoxygenated blood. यहाँ पे देखो, right atrium will receive the deoxygenated blood, है ना. Am I audible? Sound आ रहा है properly? Yes लिखिए comment box में. It will receive a deoxygenated blood via superior vena cava, blood from head, neck and upper limbs, and inferior vena cava से blood कहाँ से आएगा? Blood from the lower part of your body. Now in between right atrium and right ventricle you have tricuspid wall. Tricuspid wall, है ना. wall मतलब ये tricuspid wall मतलब क्या? So जो layers होते हैं हार्ट के, outer layer है ना पेरिकार्डियम, inner layer middle layer मायोकार्डियम, inner layer एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम का ही फोल्डिंग होता है. तो walls are nothing but the foldings of endocardium. याद रखना है, they are the endocardium. So ventricular right atrium and right ventricle has a tricuspid wall, and so blood moves from right atrium to the right ventricle, you know, via tricuspid wall. Now tricuspid wall prevent the backflow of blood from ventricle to the auricle. Blood move from ventricle to the right ventricle. Blood move from right atricle to the right ventricle and then into the lungs via pulmonary artery for oxygenation. Now left side of your heart क्या है? Left side of your heart again has a 2 chambers known as the left atrium एक and दूसरा होता है left ventricle. Left atrium क्या है? It is a thin wall. इसका thin wall होता है and it has a low pressure. It will receive oxygenated blood. From lungs via पल्मोनरी वेन. तो पल्मोनरी आर्टरी जो है, एक एक्सेप्शन है आर्टरीज में, आर्टरी कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ वेन्स विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देयर इज एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन विल कैरी ऑक्सीजनेटेड. तो एक एक्सेप्शन कहाँ पे होता है? बस लंग्स में होता है. नॉर्मली आर्टरीज क्या करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड वेन्स क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं. तो वेन्स विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज द पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट. ओके. So left side of your heart 2 chambers, 1 atrium, 1 ventricle. So atrium is a thin wall, low pressure, receive the oxygenated blood from lungs, and the left ventricle is a thick wall. Okay. Now what is the role of atrium, left atrium? इसका एक रोल है कि it will supply blood to the right left ventricle, but another role is there, also will produce the one hormone known as the atrial natriuretic peptide. एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में एक हार्मोन भी बनता है that will control the blood pressure, atrial natriuretic peptide and atrial natriuretic hormone NH and ANP. Now blood from left ventricle to blood from left auricle to the
blood from left auricle to the left ventricle, and left auricle to the left ventricle is through bicuspid wall. तो ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में है. बाइकस्पिड वॉल कहाँ पे है? बाइकस्पिड वॉल इज इन लेफ्ट auricle to the left ventricle. Bicuspid wall is also known as a mitral wall. तो याद रखना है यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल इज आल्सो नोन एज है ना arterioventricular wall. The wall between right auricle and right ventricle known as a tricuspid wall, also known as arterioventricular wall, arterioventricular wall. And the wall between left auricle and left ventricle is known as a bicuspid wall or mitral wall. Bicuspid मतलब क्या है? तो बाय है ना, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड. ट्राइकस्पिड मतलब क्या है? ट्राई मतलब तीन, ट्राई मीन्स थ्री. There are three cusp or flaps. There are three cusp or flaps. That's why tricuspid. And bicuspid means what? There are only two cusp or flap. Okay? Right? Now, and left side will have oxygenated blood. So, blood from left auricle will be sent to blood, and blood from left auricle होना चाहिए. Blood from left auricle is transported to a left ventricle. In between that there is a bicuspid wall known as a mitral wall. Now left ventricle is a very thick wall. इसका जो साइज वो थिक है, साइज इसका थिक होता है, थिक वॉल and high pressure chamber. Left ventricle will pump the blood into systemic aorta. मतलब वो जो blood vessel होता है बड़ा वाला systemic aorta to supply the blood to the body, and it will also produces left ventricle will produce a BNP. मतलब इसको बोलते हैं B type of natriuretic peptide, BNP. Left ventricle will produce a BNP. ये important है क्योंकि ये 12 में नहीं होता आपको ना. तो and between these auricles and ventricles, left side and right side, जो आपका हार्ट का लेफ्ट साइड राइट साइड है, so that is divided by a septum. Left and right side is divided by septum of heart. Right and left atria are separated by interatrial septum, which is a fibrous in nature, and left atrium and left ventricle are separated by interventricular septum. तो ये हुआ है आपका हार्ट का स्ट्रक्चर. क्वेश्चन इसके ऊपर आता है आपको कि फॉर एग्जांपल which what is the role of atrium? So atria will produce left atrium will produce ANP, atrial natriuretic peptide, and atrial natriuretic hormone. ये इंपॉर्टेंट है. वॉल्स कितने हैं, कितने चेंबर्स है, कौन सा वॉल कहाँ पे? जैसे ट्राइकस्पिड वॉल इज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. तो ट्राइकस्पिड वॉल इज आल्सो नोन एज atrioventricular wall, AV1. Then bicuspid wall is between left ventricle and left auricle, है ना. ये एक इम्पोर्टेंट याद रखना है. Now your heart has a different layers of tissue. The outer layer of your heart is known as a pericardium. Inner layer is known as a myocardium. Middle layer is known as a myocardium. Inner layer is known as endocardium. So heart has three layers of tissue. Heart has a three layers of tissue. The outer layer is known as a pericardium, which is a elastic and tough in nature. Fibrous layer बना है, made up of a fibrous tissue. Outer layer is made from a fibrous tissue known as a pericardium. Right? Now pericardium has a pericardium has a three layers. So parietal pericardium, and parietal pericardium and visceral pericardium. So in between parietal pericardium and visceral pericardium, so there is a small gap. इसमें gap होता है. So which has a flattened epithelial cells which release the serous fluid known as a serous pericardium. Pericardium
आउटर पेरिकार्डियम इज नोन एज अ फाइब्रस पेरिकार्डियम, है ना. उसके बाद में सीरस पेरिकार्डियम विच इज अ हॉलो, है ना. इन बिटवीन दैट देयर इज सीरस फ्लूइड, इसमें सीरस फ्लूइड होता है. देन आफ्टर दैट मिडल लेयर इज नोन मायोकार्डियम विच इज अ मस्कुलर लेयर. मिडल लेयर क्या है? मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर. एंड इनर लेयर इज अ स्मूथ लेयर नोन एज एंडोकार्डियम. So your heart is covered by 3 layers of tissue. 3 layers of. It is known as a myocardium. ये myocardium का structure है. You can see myocardium. Myocardium is a muscle tissue which helps the heart to pump the blood. ना myocardium की वजह से heart pump होता है, उसकी वजह से blood आता है, right? But myocardium is a muscle. It is a unique muscle in the heart. It is a unique muscle in the heart. Such kind of muscle is nowhere in the body. ये मसल कैसा है? दिस मसल इज हैविंग स्ट्रेटेड फाइबर, स्ट्रेटिफाइड फाइबर. इसमें जो स्ट्रेटिफाइड फाइबर्स होते हैं, एंड देयर इज आल्सो दिस ईच मसल फाइबर इज कनेक्टेड विद अनदर मसल फाइबर, है ना. एंड इन बिटवीन दैट देयर इज अ इंटरकैलेटेड डिस्क, है ना. एंड these fibers are interconnected. मतलब क्या है कि other muscle fiber, so other muscle fiber, say for example your other muscle fiber requires a separate stimulus. Other muscle fiber requires a separate stimulus to contract the muscle. इनको stimulus और nerve stimulus separately आना चाहिए. मतलब आपका right hand जो है, left hand जो है, उसके मसल के लिए सेपरेट स्टिमुलस, राइट के लिए सेपरेट. बट इन अ हार्ट just a one single stimulus will contract whole myocardium, है ना. so that is the difference कि myocardium contraction के लिए एक ही stimulus लगता है. so other muscle fiber require a separate stimulus for contraction, whereas a myocardium requires only one stimulus. Whole myocardium will be contracted because they are interconnected. And to enhance the conduction velocity, your intercalated disc. Okay, ये क्या है? Now layers of heart. So your heart is covered by 3-layer tissue. यहाँ पे 3-layer tissue जैसे मैंने बोला था, 3 layers of tissue. Outer tissue is nothing but the pericardium. Middle tissue is a myocardium and inner is a endocardium. So pericardium क्या है? Pericardium is composed of a fibrous tissue. Myocardium is a muscle tissue. Muscle tissue and elastic. ये muscle भी होता है and elastic tissue होता है. Muscle and elastic tissue is there in a myocardium. But outer is a fibrous tissue and endocardium is a smooth tissue, smooth endothelium. Pericardium is a outer covering of heart. क्वेश्चन आता है आपको कि outer covering of heart is nothing but the pericardium. ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, मिडल लेयर के क्वेश्चन भी आ चुके हैं. outer covering of heart is pericardium. I hope I am audible and you are getting my points. So outer covering of heart is a pericardium. Now pericardium also has a 3 layers. Pericardium में भी 3 लेयर है. outer parietal pericardium, which is a having strong fibrous tissue project in the mediastinum of your heart, है ना. सेकंड होता है इनर विसरल पेरिकार्डियम. एज अ 2 layers, इसमें इनर में 2 layers होता है. तो आउटर फाइब्रस एंड इनर सीरस, लेयर. एंड इसके बीच में क्या है? एक कैविटी होता है नोन एज अ पेरिकार्डियल कैविटी. इसके बीच में क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी. इन बिटवीन दिस देयर इज अ पेरिकार्डियल कैविटी व्हिच हैज अ स्पेस एंड इट हैज अ fluid known as a pericardial fluid secreted by a serous layer. Outer pericardium has a fibrous layer and fibrous connective tissue attached to a diaphragm and continues to the tunica adventitia of blood vessel. The tunica adventitia क्या होता है? It is the outermost layer of your blood vessel. So pericardium is continue to the diaphragm and it is continuous to the blood vessel known as a outer layer of blood vessel known as a tunica adventitia. Now it will protect the heart from over distension and over stretching. Serous layer has a
mesothelium plus connective tissue, squamous cell, and that will secrete a serous fluid which is about 25 to 35 ml. तो पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम is outermost layer of heart. Now pericardium may be, there are three layers. So outer pericardium is the outer parietal pericardium made up of a fibrous tissue and projects in a mediastinum of heart. सेकंड होता है इनर विसरल पेरिकार्डियम, इसमें दो लेयर होता है. तो आउटर फाइब्रस लेयर, इनर serous layer. In between these two layers there is a gap known as a pericardial cavity which has a pericardial fluid, or है ना, pericardial fluid है ना, and then inner visceral pericardium होता है. ठीक है. Now outer pericardium has a fibrous layer, fibrous connective tissue attached to a diaphragm, and it will continue to the blood vessel known as a tunica adventitia, that is outermost layer of blood vessel. मतलब हार्ट का जो आउटर लेयर है वही ब्लड वेसल का आउटर लेयर है. हार्ट का जो मिडल लेयर होता है मस्कुलर, वैसे ही ब्लड वेसल में मिडल लेयर मस्कुलर होता है. हार्ट का जो इनर लेयर स्मूथ होता है एंडोकार्डियम, तो वैसे एंडोकार्डियम ब्लड वेसल में आते आते उसको बनता है एंडोथेलियम. तो आउटर लेयर ऑफ ब्लड वेसल क्या है कि फाइब्रस टिश्यू, वैसे जैसे पेरिकार्डियम है आपका हार्ट का, वही आते आते चेंज होते होते आउटर लेयर बनता है ब्लड वेसल का, नोन एज अ ट्यूनिका एडवेंटिज. यू विल सी द ब्लड वेसल्स आफ्टर दैट, डोंट वरी. आउटर लेयर कौन सा है? पेरिकार्डियम. नाउ मिडल लेयर ऑफ योर हार्ट इज नथिंग बट द मायोकार्डियम. मिडल लेयर ऑफ योर हार्ट इज नथिंग बट द मायोकार्डियम. Myocardium is made from a muscular layer. It is a muscular layer made from a cardiac muscle fiber. The cardiac muscle fiber देखा है. Also known as a myocyte. Also known as a myocyte. तो क्वेश्चन आता है myocytes are present in the myocardium of your heart. है ना. Now myocardium of your heart is a muscular layer, middle muscular layer, consists of cardiac fiber, muscle fiber, also known as the myocytes, and there are of three type of muscle fiber. First type क्या है? muscle fiber which are a contractile unit of your heart. मतलब वो contraction करते हैं. muscle fiber which are a contractile unit of heart. So contractile muscle fiber bound by sarcolemma. outer मतलब ये layer होता है sarcolemma cover. The nucleus at center and myofibrils are present in the sarcomers. Sarcomers क्या होता है? contractile protein containing, एक होता है actin and दूसरा होता है myotin. Actin and myosin, troponin and tropomyosin. Then intercalated disc. Intercalated disc क्या है? Tough membrane structure between the branching of neighboring cardiac cell, formed by fusion of membrane of cardiac muscle branches. इसे आप मैंने दिखाया था ये. This is a intercalated disc. Now muscle fiber which forms a pacemaker. So there are three type of muscle in a myocardium. जो muscular layer उसमें भी तीन टाइप का है. एक होता है those which are contractile, मतलब जो contraction relaxation करता है, muscle fiber with the contractile unit of heart, है ना. Second muscle fiber होता है which forms a pacemaker, which form a pacemaker. Pacemaker मतलब क्या? So there is a unique property of your heart muscle that it will generate its own impulse. जैसे बाकी मसल के लिए क्या है कि नर्वस सिस्टम से इम्पल्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सो हार्ट इज हैविंग ऑटोनॉमी. हार्ट मसल इज हैविंग ऑटोनॉमी. हार्ट विल वर्क इट्स बाय इट्स ओन. इट विल जनरेट इट्स ओन इम्पल्स एंड इट विल ट्रांसमिट इट्स ओन इम्पल्स. बट ब्रेन विल नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन हार्ट. कि हार्ट का हार्ट बीटिंग इज नॉट, है ना. सो स्टार्ट ऑफ हार्ट बीट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन. ऐसा नहीं कि हार्ट आपका ब्रेन चालू कर देगा, है ना. आप बोलने के लिए बोलते हो, है ना, बोलने के लिए आप बोलते हो कि यू आर माई हार्ट बीट, तुम मेरे दिल की धड़कन हो. तो 2 मिनट रोक के दिखाए, है ना. आप बोलने के लिए बोलते हो ना कि तुम मेरे दिल की धड़कन हो. धड़कन हो तो रोक के दिखाए भाई, है ना. तो इट इज नॉट अंडर योर वॉलंटरी कंट्रोल. यू कैन नॉट स्टॉप योर हार्ट बीट. आप हार्ट बीट स्टॉप नहीं कर सकते बिकॉज हार्ट हैज सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी. तो मसल फाइबर विद द पेस मेकर. सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मसल which generate a impulse or heartbeat, which generate a impulse
for heartbeat. It has a pacemaker cells. It is known as a SA node. SA node. SA node कहाँ पे होता है? मायोकार्डियम में होता है. That is a specialized muscle fiber which has a capacity to generate impulse spontaneously. Third type of muscle in the myocardium is nothing but the muscle fiber which is a conduction system of your heart. Conduction मतलब क्या? जो impulse बनाया है ये transmit करना. So modified cardiac muscle fiber to transfer the impulse from SA node to the AV node and other part of your heart. तो outer part क्या है heart का? Pericardium. Outer layer of heart is a pericardium. Middle layer is a myocardium. मायोकार्डियम में क्या है कि कॉन्ट्रैक्टाइल मसल भी है, पेसमेकर वाले मसल भी है एंड कंडक्शन सिस्टम वाले मसल भी है. और एंडोकार्डियम मतलब क्या? इनर लेयर ऑफ योर हार्ट. एंडोकार्डियम इज अ inner layer of heart. It is a very smooth layer and formed by there are endothelial cells. Single layer of endothelial cells. Endocardium is made from a single layer of endothelial cells. Smooth endothelium होता है. So to prevent the coagulation of blood in the system, ये smooth होता है. So endocardium is the inner layer of your heart and it has a endothelial cells layer, single endothelial cell. It continues as a endothelium of blood vessel. So blood vessel में भी there are 3 layers of blood vessel: outer fibrous layer, inner muscular layer and middle muscular and inner smooth layer. So outer layer is a tunica adventitia, middle layer is a tunica इनर लेयर का एंडो है ना. तो ये है. नाउ एक्शंस ऑफ हार्ट मतलब हार्ट का एक्शन कैसे डिस्क्राइब करेंगे. तो एक्शंस ऑफ हार्ट, फर्स्ट वन इज अ क्रोनोट्रोपिक एक्शन. ये पार्ट नोबडी हैज टॉट यू, आई नो, किसी ने आपको पढ़ाया नहीं होगा. तो एक्शंस ऑफ हार्ट पहले देखो. क्रोनोट्रोपिक एक्शन मतलब क्या है? It is related with the heartbeat. याद रखना है heartbeat. Chronotropic action is related with the heartbeat. मतलब क्या है ना? रेट, हार्ट रेट और हार्टबीट. तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग मतलब क्या? पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग विल इंक्रीज द हार्ट रेट, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग विल डिक्रीज द हार्ट रेट. तो क्रोनोट्रोपी मीन्स हार्टबीट. क्रोनोट्रोपिक एक्शन इज रिलेटेड विद द हार्टबीट. कितना बीट कर रहा है पर मिनट, है ना? नॉर्मली कितना होना चाहिए? 72 बीट ऑन एन एवरेज. ज़्यादा बीट कर रहा है तो, है ना, तो ड्रग विच इंक्रीजेज द हार्ट बीट known as a positive chronotropic drug. Drug which decreases the heart beat known as a negative chronotropic drug. So known as the chronotropic action of your heart. दूसरा एक्शन होता है आइनोट्रोपिक. Inotropic action is related with the force of contraction. Any drug that will increase the force of contraction known as a positive inotropic drug. Any drug that will decrease the force of contraction of your heart known as a negative inotropic drug. So inotropic is related with the contraction. So positive inotropic drug क्या करेगा? Positive inotropic drug will increase the force of contraction of myocardium and negative inotropic drug will decrease the force of contraction of myocardium. तो क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट मतलब हार्ट रेट बढ़ने वाला है, कम करने वाला. तो जो ड्रग हार्ट रेट बढ़ता है उसको पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक बोलते हैं, जो कम करता है उसको नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक बोलते हैं. जो ड्रग फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ता है उसको पॉजिटिव आइनोट्रोपिक बोलते हैं. जो ड्रग कम करता है ना, उसको बोलते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिक. तो आइनोट्रोपी इज रिलेटेड विद द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, क्रोनोट्रोपी इज रिलेटेड विद द हार्ट बीट एंड हार्ट रेट. और तीसरा एक्शन होता है ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट. ड्रोमोट्रोपिक एक्शन. Dromotropic means what? So related with the conduction of impulse in the heart. So those drugs which will increase the conduction of impulse in the heart known as a positive dromotropic drug, and those drugs which will decrease the conduction of heart known as a negative dromotropic drug. तो क्रोनोट्रोपी मतलब क्या? हार्ट रेट. आइनोट्रोपी मतलब क्या? फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. ड्रोमोट्रोपी मतलब क्या? कंडक्शन वेलोसिटी. एंड उसके बाद में भी आता है और देखते हैं, ठीक है. ड्रोमोट्रोपिक मीन्स दैट विल इंक्रीज द
and a drug that will increase the conduction of heart known as a positive dramatropic, and drug that will decrease the conduction of heart known as a negative dramatropic. ठीक है. Now फोर्थ एक्शन होता है बाथमोट्रोपिक. फोर्थ एक्शन होता है बाथमोट्रोपिक. तो बाथमोट्रोपिक एक्शन क्या है? रिलेटेड विद द एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल. ड्रग विच इंक्रीजेस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल नोन एज बाथमोट्रोपिक, पॉजिटिव बाथमोट्रोपिक. ड्रग दैट विल डिक्रीज नोन एज नेगेटिव बाथमोट्रोपिक. लास्ट होता है लूसिट्रोपिक एक्शन. लूसिट्रोपिक एक्शन, लूसिट्रोपिक एक्शन मतलब क्या है? Actions of relaxation function of your heart. So drug which increases the relaxation known as a positive lucitropic drug. Drug which decreases the relaxation known as a negative lucitropic drug. तो ये actions है हार्ट की. Now we'll see the blood vessels. Blood vessels is nothing but the blood vessel का काम क्या है? It will carry blood, है ना? Blood vessel का काम क्या है? It will carry the blood. There are two type of blood vessel. There are two type of blood vessel. एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन. There are two type of blood vessel. एक होता है आर्टरी, होता है वेन. So artery will carry oxygenated blood away from the heart, and veins will carry deoxygenated blood towards the heart. इसका डिफरेंस अपन बाद में देखेंगे, but before that blood vessel, layers on a blood vessel. Blood vessel है ना, artery and veins. So artery will carry oxygenated blood and they are the thick walled. इसमें क्या है? thick wall होगा, जाड़ होंगे वो, मतलब है ना. And veins will carry deoxygenated blood. They are the thin walled. So veins will carry deoxygenated blood. इसमें एक्सेप्शन क्या है? pulmonary vein. Artery will carry oxygenated blood. इसमें एक्सेप्शन क्या है? pulmonary artery. Now outermost layer of your blood vessel is known as tunica externa. Tunica externa और tunica adventatis भी बोलते हैं उनको. Tunica externa is the outermost layer of blood vessel. दोनों का मतलब आर्टरीज का, वेन का. तो मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर. इसमें कोलेजन फाइबर होंगे, एंड जो ब्लड वेसल के लिए ब्लड सप्लाई करता है उसको बोलते हैं वैसा वेसोरम. वैसा वेसोरम विल सप्लाई ब्लड वेसल टू द blood vessel itself, muscles of blood vessel. So tunica externa, outer layer of blood vessel, both. So it is made from a collagen fiber, elastic fiber होता है outer. Then tunica media is known as the middle muscular layer. Outermost layer is known as the fibrous layer, collagen fiber रहे, tunica externa. Tunica media made up of smooth muscles and elastic fiber. So it is more in case of arteries. So ये जो middle layer होता है वो ज़्यादा होता है arteries में. So tunica media is more in case of arteries. It is a less in case of your veins. And that's why veins are the thin walled, arteries are the thick walled. Right? So tunica media, smooth muscle and elastic fiber layers is present in the blood vessel. So more in the arteries, and it is supplied with the nervous control. Nerves will control the muscles of blood vessels, constriction and relaxation. Then innermost layer of your blood vessel is the tunica intima. What's that? Tunica intima, also known as a, this may be it is a smooth layer made from a endothelial cells. Tunica intima. The inner layer उसमें endothelium बोलते हैं उसमें. Subendothelial layer is also the inner elastic membrane. So arteries, large artery will divide into small arteries known as arterioles. Arterioles will divide into small arteries known as capillaries. Veins will also divide into small veins known as veins, and बाद में venules, बाद में capillaries. So there is a unit of this network of capillaries, mixing of arteries and veins. Here there is an exchange of gases. यहाँ पे टिश्यू लेवल पे टिश्यू रेस्पिरेशन. और आर्टरीज
will not have walls, veins will have walls. तो वेन में walls होते हैं to prevent the backflow, walls और cups. वेन में होता है walls और cups, आर्टरी में नहीं होता. Now blood vessels है ना. तो largest blood vessel is a aorta है ना. देन आर्टरीज, aorta के बाद में बनेगा आपका आर्टरीज एंड बाद में बनेगा आर्ट्रियोल्स, बाद में बनेगा कैपिलरीज. तो आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी इज aorta which is a 25 mm in size है ना. देन it will become a small known as arteries which is a 4 mm in size है ना. एंड देन arterioles which is a 10 micron in size. इसमें मसल लेयर ज्यादा होता है, arterioles में मसल लेयर होता है. then it will become a capillary smaller. Then capillary will unite a vein capillary unite to form a vein, venules will unite to form a veins, and then largest vein is the vena cava. Anastomosis is the connection or joining between two blood vessels है ना. जैसे anastomosis क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल blood vessels of your palm, जो आपका हाथ का palm है, blood vessels of your palm, blood vessels of your soul, आपका जो फीट का सोल होता है, सोल एंड मायोकार्डियम. तो anastomosis is nothing but the है ना कनेक्शन फॉर जॉइनिंग ऑफ ब्लड वेसल. मतलब ये एक ब्लड वेसल से बाकी ब्लड वेसल निकलेंगे है ना. जैसे पाम का अगर कोई ब्लड वेसल ऑक्लूड होता है, if there is a occlusion of blood vessel of palm, so it will find a new blood vessel. सोल का भी वैसा है, मायोकार्डियम का भी वैसा है. so if coronary artery is blocked, so it will supply ना बाईपास क्यों कर दे. मतलब coronary artery ब्लॉक हो गए तो बाईपास सर्जरी होता है. बाईपास सर्जरी मतलब क्या है, बाईपास सर्जरी मतलब वही जो मेजर में ब्लॉक हो गया है वो हटा के वहां से दूसरी ब्लड वेसल को सप्लाई कर देते हैं बाईपास. known as the anastomosis, right? Now largest artery कौन सा होता है, largest artery is nothing but the artery, is nothing but the aorta. So arterial system and venous system. Arterial system मतलब artery रहेगा इसमें, artery oxygenated blood, and venous system मतलब क्या, venous blood मतलब veins रहेंगे, venous. So arterial system, largest artery is nothing but the aorta. आर्टरीज का वॉल जो है, आर्टरीज विल हैव 3 layers of wall. outer tunica adventitia made from a connective tissue and continuous with the fibrous layer of pericardium. So middle layer of artery is nothing but the middle tunica media. Middle layer क्या होता है, tunica media, made up of a smooth muscle. The inner layer of artery is a tunica intima made up of a endothelium, and it is a continuous to the endocardium. So endothelial layer मतलब inner layer of blood vessel will also produces the endothelium derived electric factor which is known as a nitric oxide. तो inner layer of blood vessel जो artery का जो inner layer है endothelium will produce a local vasodilator, blood vessel को dilate करने वाला लोकल वेस्टोलिटर होता है EDRF मतलब एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर व्हिच इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड. नाउ साइज ऑफ ब्लड वेसल विल डिक्रीज. aorta का साइज बहुत बड़ा होता है, आर्टरीज का उससे कम होता है, आर्टरियोल्स का उससे कम होता है. तो आर्टरीज they will resist the blood vessel, resistant to the blood flow in arterioles, and that's why resistance to the blood flow is there in arterioles. That's why it is known as a peripheral resistance. So resistance offered by arteries to the blood flow. जो blood flow के लिए resistance offer करता है, तो arterioles will resist the blood flow है ना. That is known as a peripheral resistance. ब्लड प्रेशर के लिए 2 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कार्डियक आउटपुट. तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आर्टरियोल्स, स्मॉल आर्टरीज टू द फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लड फ्लो के लिए रेजिस्टेंस जो है ना ऑफर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज द पेरिफेरल
resistance, and that's why these blood vessels are known as a resistant blood vessel. So arterioles will continue to form a capillaries. Capillary will have a dimension of 5 to 8 micron, which are important for exchange of nutrition and waste material to the tissue. Now venous system में क्या है? Venous capillary बनेगा, उसके बाद में capillaries, जो वेन कैपिलरी वो वेन्यूल्स बनेंगे, बाद में वेन बनेगा. वेन क्या आता है? 5 mm इन साइज. बाद में मेजर वेन सुपीरियर वेन रखा हुआ, इंफीरियर 30 mm इन द साइज. वेनुल का साइज होता है 20 माइक्रोन. लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड आर हेल्ड इन venules. Large quantity of bloods are held in the venules, and that's why they are known as a capacitance blood vessels. That's why they are known as a capacitance blood vessels. ये टर्म से याद रखना. ये कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ये टर्म आपको एंजाइना पेक्टोरिस में काम आएंगे. These terms are very important. Angina pectoris. While studying the anti-anginal drug, you will encounter these terms, capacitance and resistance. So that's why try to clear here only capacitance and resistance. You can see the difference between arteries and veins. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि arteries and veins. Artery carries the oxygenated blood, and artery carries the blood away from the heart. Artery carries blood away from the heart and oxygenated blood with the high pressure. Exception क्या है? Pulmonary artery. Pulmonary artery will carry deoxygenated, है ना. Now arteries are the arteries. Now veins will carry deoxygenated blood. Except क्या है? Pulmonary vein. Pulmonary vein में oxygenated blood होता है, and veins will carry blood towards the heart. Artery away from the heart, and they will carry blood with the low pressure, relatively with the low pressure. तो याद रखना है, arteries will carry blood towards the heart, will carry oxygenated blood with the high pressure, and veins will carry blood towards the heart with the low pressure and deoxygenated blood. Exception याद रखो. Arteries are thick wall होता है इसमें, and they are deep in the skin. Veins are thin walled and they are superficially, subcutaneously in the skin. Walls are not present in the arteries. Walls are not present in the artery. Walls are absent. Walls are present in the veins. And आर्टरी में होता है पल्सेटाइल फ्लो. आर्टरी में होता है पल्स फ्लो. मतलब इफ देयर इज अ कट इन द आर्टरी, तो आर्टरी से बहुत प्रेशर से ब्लड बाहर आएगा और रिपीटेड पल्सेस में आएगा, है ना. बट वेन्स में स्लोली ब्लड बाहर आएगा लेकिन स्मूथ आएगा, राइट. ब्लड वेसल, है ना. तो रिमेनिंग पार्ट विल सी टुमारो. बाकी का पार्ट कल देखते हैं. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विल टेक 2 or 3 lectures. So tomorrow we'll see the remaining part. I hope everybody has understood. आज का समझ में आया तो yes लिखिए कमेंट बॉक्स. If anybody has understood, write yes in the comment box. है ना. आज का समझ में आया तो आज आपने सिर्फ हार्ट का स्ट्रक्चर एंड ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर देखा है. कल अपन फिजियोलॉजिकली जाएंगे. Tomorrow we'll see the physiological, all this cardiac cycle, some diseases of heart. Okay, so see you tomorrow, and everybody please try to join the lecture every day.